बाबू लोगों के हवाले जम्मू कश्मीर को किया गया है, जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी ही नहीं है, जम्मू कश्मीर की समस्याओं के बारे में मालूम नहीं है और लोगों के साथ कोई भी राब्ता नहीं है। लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस महोदय की अदालत में हमने एक अर्जेंसी मेमो लगाया है। जो रिट पिटीशन हमने दायर की है जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव करवाने के लिए, उसकी जल्द हियरिंग होनी चाहिए और इसके संदर्भ में जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि 5 सालों से जम्मू कश्मीर में प्रॉक्सी रूल चल रहा है। 2018 में असेंबली सस्पेंड हुई, उसके बाद डिसॉल्व हुई और प्रॉक्सी रूल जम्मू कश्मीर में चलाया जा रहा है जो लोगों के हित में नहीं है। बाहर से ब्यूरोक्रेट्स को लाकर जम्मू कश्मीर के निजाम को चलाने की कोशिश की जा रही है। बाबू लोगों के हवाले जम्मू कश्मीर को किया गया है, जिनको जम्मू कश्मीर की जानकारी ही नहीं है, जम्मू कश्मीर की समस्याओं के बारे में मालूम नहीं है और लोगों के साथ कोई भी राब्ता नहीं है। लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो चुके हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एक एनार्की का माहौल जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। आम नागरिकों के साथ सरकार का कोई भी संपर्क नहीं है और चुनाव को लगातार टाला जा रहा है। कभी ये कहा जाता है कि बहुत सर्दी है, कभी ये कहा जाता है कि स्नोफॉल है, कभी ये कहा जाता है कि बहुत बारिशों का मौसम है, कभी सर्दी का, कभी गर्मी का, कभी अमरनाथ जी की यात्रा है, कभी डिलिमिटेशन का बहाना लेकर चुनाव को लगातार टाला जा रहा है। और अभी हाल ही में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने एक बयान दिया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि पीआरआई की इलेक्शंस होंगी, अर्बन लोकल बॉडीज की इलेक्शन होंगी, पार्लियामेंट की इलेक्शन होगी, लेकिन असेंबली इलेक्शन का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। और असेंबली इलेक्शन न होने की वजह से भ्रष्टाचार का जम्मू कश्मीर में बोलबाला है। आम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, बेरोजगारी अपनी चरम सीमा के ऊपर है, डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो पूरे तरीके से ठप हो चुका है और ऐसे माहौल में लोग बहुत निराश हैं। एक मायूसी का आलम जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है और इसलिए ये लाजमी हो जाता है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में इलेक्शंस हो रही हैं, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाए जाएं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान का वैसा ही एक हिस्सा है जैसे बाकी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं और इसके साथ सुतेला व्यवहार करना किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। हमने ये अर्जेंसी मेमो जो है इस संदर्भ में चीफ जस्टिस महोदय की कोर्ट में आज लगाया और उन्होंने कहा है कि इसको एग्जामिन करके और उसके बाद ये फैसला दे देंगे और सुनवाई के लिए वो उचित डेट जो है इसके बाद हमें दे देंगे। इसीलिए आज हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और हमने ये पिटीशन जो है अर्जेंसी मेमो का दिया है यहाँ पे कि जल्द से जल्द ये फैसला हो सके और जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द चुनाव हो सके और जमहूरी निजाम बहाल हो सके। Harshdev ji, people want to know what all legal issues you have raised in your writ petition. You see, there are so many issues which have been raised in this petition. The Supreme Court says that wherever assemblies are prematurely dissolved, elections need to be held within a period of 6 months and assemblies reconstituted. But these directions of the Supreme Court are being violated in Jammu and Kashmir. Even the Constitution is being violated. There is a constitutional void in Jammu and Kashmir because the law as well as the Supreme Court say the elections need to be held periodically. Elections should not only be free and fair, but they have to be periodic. At regular intervals, elections should be held so that the representatives chosen by the people could be replaced by them if they do not fulfill their urges and aspirations, and people need to be governed through their elected representatives. This is the basic spirit of democracy. Elections are the barometer of democracy.
Elections are the bedrock of democracy. You cannot avoid elections for as long as 5 years without any justifiable reason. And that's what we are, for what we are appearing before the court. And these are the grounds we have taken. And likewise, elections have been held to be the basic structure of constitution. In Keshwanath Bharati's case, is said the regular elections, periodic elections are the basic structure of the constitution, and delaying them would amount to violation of the constitution. So likewise, several other issues have been taken up by us, and one of such issues is when we are holding elections for the local bodies, urban local bodies, rural local bodies, as well as the parliament. How is it that you refuse to hold elections for the assembly? So this is just ridiculous. The BJP government does not want to hold elections because it's not prepared for the elections. And that's why they are indulging in such kind of delay and deny tactics only to deprive the people of their democratic rights. Sir, how much hopeful are you that you would succeed in this case? We are very confident about it. The Supreme Court would definitely take cognizance of the issues that we have raised in our writ petition, and it will naturally definitely intervene in this and issue instructions. We have sought issuance of instructions to the Government of India as well as the Election Commission of India to initiate immediate measures for holding free and fair elections in Jammu and Kashmir as are being held in other states of the country. And Jammu and Kashmir is not a state which could be governed through remote control by the center. This is a very, typical situation which is prevailing in Jammu and Kashmir, and only a legitimately elected government could be the antidote for extremist violence. The violence could be curbed, peace and normalcy could be restored only if free and fair elections are held, and that too without any further loss of time. The situation is bound to deteriorate in the days to come if this proxy rule of the center continues this way, and we have appealed to the court that their intervention is a must, and we are hopeful that we'll be getting a positive response from the court and elections would be held in Jammu and Kashmir at the earliest.